Hello everyone, this is Kamna from Gurukul T21 NCR's exclusive Down syndrome school. So I'm presenting medical intervention in Down syndrome. First, we'll talk what is Down syndrome. Anybody who's coming here and listening to this audio or this watching this PPT, I hope knows what is Down syndrome because that is why he is here. Down syndrome is a chromosomal disorder. डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें इन विच देयर इज एन एरर इन सेल डिवीजन में एक एरर होता है जिसकी वजह से इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है एंड दिस लीड्स टू इम्पेयरमेंट्स इन बोथ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड फिजिकल ग्रोथ जिसकी वजह से मानसिक विकास में थोड़ी सी डिले या इम्पेयरमेंट और फिजिकल ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम इम्पेयरमेंट देखी जाती है जिसे कि हम बहुत ज़्यादा नहीं माइल्ड टू मॉडरेट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ देखी जाती हैं इसकी वजह से यानी अगर मैं कहूँ इस क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से एक नॉर्मल बच्चे के विकास में जो हल्की जिस तरीके की ग्रोथ देखी जाती है उससे थोड़ा सा ग्रोथ बच्चे की पीछे होती है साइमल्टेनियसली कुछ फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से जो कि हम इसमें बात करेंगे आने वाले स्लाइड में पहले में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर्स हैं देखे जाते हैं जैसे इसमें लिखा ग्रोथ फेलियर मेंटल रिटार्डेशन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल मेंटल रिटार्डेशन ऐसे बच्चे में होती है सिर्फ वो बच्चा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी एज से बिहाइंड द एज बच्चा चलता है बट दैट डजंट मीन ही इज मेंटली रिटार्डेड दीज स्टूडेंट आर वेरी मच एबल and they can very much do very many things, very talented things, they are very creative and they can do lot of things in their life. So क्या फीचर्स देखे जाते हैं जैसे एक फ्लैट फेस थोड़ी स्लैंटिंग आइज एपिकैंथिक फोल्ड हम जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी आँखें ऑलमंड शेप या थोड़े से शॉर्ट नोज या क्योंकि नेज़ल विच नहीं देखा जाता एंड थोड़े से डिफरेंट शेप ऑफ ईयर्स जैसे आप फीचर्स में पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बच्चों में पामर क्रीज भी देखी जाती है एंड sort of less there is in a hand and there's a crease in the hand and ऐसा ज़रूरी नहीं हर बच्चे में इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो लेकिन किसी बच्चे में ऐसे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज या इस तरीके से कोई हार्ट डिजीज़ या कोई लार्ज कोलोन या कोई इस तरीके के फीचर्स भी आ सकते हैं पुअर हाइपोटोनिया नॉर्मली काफ़ी बच्चों में देखा जाता है एंड हाइपोटोनिया वेरी करती है टोन मसल टोन बच्चे की एंड किसी की थोड़ी हाइपोटोनिया हो सकता है यानी पुअर मसल टोन किसी में बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिया हो सकता है पर ज़्यादातर बच्चों में हाइपोटोनिसिटी पाई जाती है फुट लाइक बिग टोज वाइडली स्पेस्ड ये कॉमनली देखा जाता है काफ़ी बच्चों में सो जब बच्चा पता चलता है कि दिस इज जेनेटिकली सम प्रॉब्लम सो सबसे पहले बच्चे की क्रोमोसोम टेस्ट किए जाते हैं फिश टेस्ट किया जाता है एंड देन वंस इट इज़ कंफर्म्ड कि कौन से क्रोमोसोम यानी 21st क्रोमोसोम की अनॉमली है तो जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है दिस इज़ कंफर्म्ड जो कि आप यू कैन सी इन दी स्लाइड एंड देन वंस इट इज़ कंफर्म्ड द चाइल्ड इज़ tested with many other levels कोई हियरिंग इशू तो नहीं है विजन एट टाइम ऑफ बर्थ कैसा है रेटिना स्कोपी की जाती है एंड देन
अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कोई GI की प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या कोई हार्ट इश्यूज़ तो नहीं है, एंड जो भी चीज़ें पाई जाएँ उनके लिए इंटरवेंशन की जाती है एज अर्ली एज पॉसिबल। और जहाँ लगता है कि थोड़ा वी कैन वेट, लाइक सम ASD या VHD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के लिए जो कुछ फीचर्स होते हैं हार्ट में, कई बार वेट करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि विद टाइम इट ग्रोज इटसेल्फ। सेप्टल अपने आप भी टिपिकल चाइल्ड में भी ये अपने आप भरता है कुछ टाइम के बाद, और डाउन सिंड्रोम में थोड़ा ज़्यादा डिलेड हो जाता है, एंड कई बार वो पूरा भरता है, कई बार नहीं भी अगर होता है तो इट मे नीड सर्जरी, एंड कई बार इमीडिएटली एट बर्थ भी करेक्टिव सर्जरीज देखी जाती हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी चाइल्ड. And then, like, you can see there's some certain common issues, like some almost 50% of the children may have cardiac issues. Vision, poor vision बहुत ज़्यादा देखा जाता है. एंड अगर हम कहें तो बच्चों को एज अर्ली एज पॉसिबल हमें विजुअल एरर्स के लिए वी शुड कीप चेकिंग, और वी शुड हैव सर्टन, अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वी शुड कीप बिगर इमेजेस, बड़ी इमेजेस हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि नियर विजन में कहीं ना कहीं देयर आर ऑप्शंस की देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड देन ऑब्वियसली आई चेकअप्स आर मस्ट. डेंटल चेकअप जिसमें देर से दांतों को आना या ठीक कम आना या इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, और अगर ये चीज़ें ना भी हों तो उसके बावजूद भी sometimes caries जो कहते हैं, इंटरनेडेंटल caries कहते हैं, there are higher chances they are seen in the children because of hygiene issues, and not able to maintain the hygiene or anything. So we must make sure that we brush them twice a day. We make sure that we have good hygiene, and we keep on do regular health dental checkups also, because any dental issues may lead to any कोई हमें dental eruption करानी है तो we need to go for anesthesia, something which should avoid with the children. So then we come for GI disorders. हाइपोटोनिया होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है, अक्सर देखा जाता है. एंड देन सम चिल्ड्रन मे हैव सीलियाक डिजीज ऑल्सो, और 1% इज लाइक हर्शप्रंग्स डिजीज. दिस इज रेयर, बट वन शुड कीप अ वॉच ओवर इट. कई बच्चों में ग्लूटेन फ्री डाइट भी दी जाती है. So it depends if they are found to have this gluten intolerance or something. So like a normal child, everything needs to be assessed, everything needs to be seen, checked, और उसी तरीके से there are like 1% chances कि कहीं लीकीमिया या इस तरीके के या कोई ब्लड डिसऑर्डर्स और एनीमिया इस तरीके का भी हो तो that has to be ruled out. Behavioral issues, as child grows, then you see the behavior of the child, and eye contact ना आना, और socially ज़्यादा सोशल ना होना एक प्राइम फीचर है. स्पीच बहुत ज़्यादा टाइम तक ना आना एक प्राइम फीचर है, जो आपको एक थोड़ा सा डाउट देता है कि कहीं बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के कुछ 1% बच्चे ऑटिज्म के साथ भी मिक्स देखे जाते हैं. एंड व्हाट आई वुड से इज डाउन सिंड्रोम बच्चे themselves are very very social, and then it is not that they do not have eye contact, they give good eye contact. So that means we should keep a watch on these features as early as possible, because sometimes we start keep on handling child as per how as per Down syndrome, and we keep on doing, but we don't find good results. So once we know कि he has mixed features of autism and Down syndrome, and we teach that child as per autism, autistic child, कि हम images और small step, breakdown steps, और उस तरीके से जब हम treat, educate या जो भी हम steps लेते हैं उसको सिखाने के लिए, so the child responds more quickly. So we must actually try to rule this out. So then why should I visit a pediatrician? Why should I go to a pediatrician? हमें अपने बच्चे को pediatrician के पास जाकर क्या expect करना चाहिए? We should go to a pediatrician, and
have a heightened growth monitoring as per डाउन सिंड्रोम पैरामीटर्स. एज इन हम लोग सोचते हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चा है तो भी हम एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से उसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और हमेशा उस तरीके से उसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं. सो दे आर charts like I'll give in the slides. So we should go as per Down syndrome chart. They're easily available over the net. And आप उन्हें डाउनलोड कीजिए और उसके हिसाब से अपने बच्चे के पैरामीटर्स कैलकुलेट कीजिए. और एंड दैट्स हाउ अ पीडियाट्रिशियन शुड एक्चुअली डू दैट. Nutritional supplements, normally there's some people who recommend ki then they're actually not needed, but actually we'll talk about this in the coming slides. Immunization, constipation, recurrent infections, GI, reflux and endocrine study, all these topics we're going to cover in the further coming slides. um, so like these are the charts that I was recommend for growth study. And once the child is going proper growth wise, and you feel the child is not growing even as per Down syndrome parameters, so there are certain deletion of antioxidants and amino acids and digestive enzymes, certain nutrients that are deleted from a child's body regularly. So that affects in the metabolism, growth, general development, developmental patterns. So what should we do? It would give, I mean, अगर हम टेस्ट वगैरह कराएं तो कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ पे या टेस्ट पे कहीं ना कहीं we'll get to know कि something like this is happening. So what can we do actually? So we can go for nutritious diet. बहुत अच्छे से अच्छा हम सारे vitamins अगर हम लिखें कि भाई sufficient antioxidants हमें बच्चों को देने चाहिए, vitamin C, A, E, beta carotene, coenzyme, zinc, selenium. We should make sure these vitamins are there in the food of our children, because deficiency of vitamin A may show like depressed immune system. They already have less immunity, ड्राई स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कॉमनली देखे जाते हैं. विटामिन ई के भी बेनिफिट्स हैं कि मतलब अल्जाइमर्स को डिले करता है, इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, एंड देन इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. विटामिन बी नर्वाइन सिस्टम को आपके सपोर्ट करता है, फटीग को रिमूव करता है, न्यूरो डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करता है. सो देयर सर्टेन benefits of all the antioxidants के कुछ benefits हैं. Like I've given a list of this coffee and pomegranate juice, and these are the antioxidants that actually you can actually incorporate. So कितना भी आप ये वाले vitamins अब you can always have a check on that कि ये vitamins किन चीज़ों में है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू मुझे ये विटामिन मिलते हैं, ए से मिलता है, बी से मिलता है, सी के लिए आप लाइम जूसेस ये सब यूज़ कर सकते हैं. सो while doing all this, the idea is to maintain the vitamin levels in the body of a child. If we can actually do that, it's really really good. Like अगर मैं कहूँ zinc की deficiency से sometimes child may have some deficiency of zinc. अक्सर देखा जाता है, ऐसा पाया जाता है कि बच्चों में zinc deficiency होती है, और उसकी वजह से स्टूल्स या इस तरीके की या बार बार स्टूल्स जाना, इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं. सो बेसिकली हमें वो वाइटामिन एवरी डे वी हैव टू गिव जिंक टू द चिल्ड्रन. थोड़ा सा अगर हम ये करें कुछ वाइटामिन डेफिनेटली उनकी बॉडी फूड में इंक्लूड कर दें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प आवर चिल्ड्रन. सो we can have additional zinc in the diet as a supplement. We can have a multivitamin regularly supplementing to them. We can have an antioxidant. Maybe हम उतना ज़्यादा medicines नहीं भी कर सकते. We can have some variations or some gaps. Vitamin C के लिए we can have lemon every day, थोड़ा few drops of lemon juice in the water, or maybe a course of vitamin C every 15 days. We must do deworming so that there are no worms in the child's body, so that जो हम इतना न्यूट्रिशन और सब देते हैं फिर भी worms की infestation की वजह से that is again not absorbed. So we need to take care of this. So for all this we should visit our pediatrician and expect him to guide us in these things, so that our children have less infections and good growth, and then delayed aging, and reduces the chances of other issues
It even helps in gross motor and fine motor coordination if we have good nutritional diet to the children. So if we can actually do it with normal food diet, it's very good. But if we cannot, so there's a list of I've given कितना vitamin A, कितना C, D, E, जो कितना कितना actually हमारे बच्चों को मिल सकता है और मिलना चाहिए. सो दिस अ लिस्ट आई हैव गिवन. एंड आप अगर उस तरीके के विटामिन का कुछ मार्केट में बाहर कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बाहर से आप मंगा सकते हैं, या तो गुड इनफ नहीं मंगा सकते हैं तो भी यहाँ के सप्लीमेंट्स की हाई डोज करके आप उससे सप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए. एंड प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग योर सेल्फ. फॉर ऑल दिस यू नीड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन कि दिस इज़ हाउ व्हाट आई वांट, कि इस तरीके के सप्लीमेंट्स आप हमें गाइड करें. साइमल्टेनियसली एक अवेयरनेस के लिए यू मस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चों को अमॉक्सिसिलिन ना prescribe किया जाए, because it can cause a problem with our kids. So amoxicillin group should be avoided. Apart from that, this some probiotics should always be added in the diet. There should be some maybe flaxseed oil kind of DHA or EPA included as a nutritional supplement, so that make sure the children are well supported. DHA कितना होना चाहिए, I've mentioned in the slide. And vitamin D is also recommended in 1000 international unit under 6 and 2000 international units above 6 years of age. And in some countries regularly vitamin D is supplemented, जो जिसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम में हाइट थोड़ा कम होती है, जितना मैक्सिमम बच्चे हाइट कवरेज ले सकते हैं दे कैन. एक जिनको बिलोबा का भी हमने सुना है कि इट हेल्प्स चिल्ड्रन, बट उसका थोड़ा सा there's certain pros and cons which we must confirm before giving. It's a it dilutes blood, and we must check to some pediatrician before starting ginkgo biloba. मतलब net पर easily available, people see it's been recommended and they buy and they start using, so they must confirm it. curcumin हल्दी के अंदर रहने वाला एक खास सॉल्ट है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कोई बच्चे में या किसी भी इंसान में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, कोई कैंसर की अगर कोई चीज़ होती है तो कर्क्यूमिन एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है. तो इफ़ यू वांट और थोड़ी डोसेज में आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एज अ प्रोबायोटिक कोई इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक्स या नेचुरल प्रोबायोटिक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद कर्ड एवरी डे और एनीथिंग लाइक दैट. सो एक GER हम क्या देखते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कॉमनली देखा जाता है बच्चों में, जिसे हम कहते हैं कि कुछ 1-2 साल तक उल्टी या उस तरीके का बच्चे काफ़ी ज़्यादा करते हैं. सो व्हाट वी मस्ट डू इज़ टू कंट्रोल दिस रिफ्लक्स. हम बर्प एज मच एज पॉसिबल कराएं, और फिर भी अगर लगता है कि भाई बच्चा उस चीज़ को नहीं कॉपरेट टॉलरेट कर पा रहा, तो वो बिकॉज ऑफ ईसोफेगस की प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से. सो वी मस्ट मेक श्योर कि हम बच्चे की कोई एंटासिड देकर हम उसको सपोर्ट करें. कॉन्स्टिपेशन अक्सर देखा जाता है बिकॉज ऑफ लोअर टोनिसिटी, तो हम उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर या लॉट ऑफ फ्लूइड्स हम उसमें दें. लेकिन हम फिर भी हम वी मस्ट मेक श्योर दैट वी हैव रूल्ड आउट द चाइल्ड may not be having hypothyroidism. अगर है तो हम उसे ट्रीट करें Hirschsprung's disease or celiac disease, so that untreated constipation can cause piles, sinus or fistula in later years. So early years से हम fluids और fiber और laxative, maybe any laxative like Dufalex, Cremofen or maybe Isabgol, whatever we feel under the medical guidance, we must try and supplement to our children. There are recurrent infections, these मतलब आज kids definitely have recurrent infections because of low immunity or मतलब whatever reasons. So we must make sure कि उनके immunity levels maintain रहें. उसके लिए आप immune system को better करने के लिए कुछ herbal products like Septulin या कुछ immunity के लिए products कुछ कंपनीज में आते हैं, आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं. आई समटाइम्स रिकमेंड दिस हम जो मदर्स का मिल्क होता है उसमें
the first milk that comes is colostrum, and these days colostrum tablets or powders are easily available. So if we give them as a supplement, I feel I've found a lot of results with this कि बच्चों की immunity बहुत better हो जाती है इससे. So this is again one thing we can try. So before we start endocrine issues, I'll just say कि next would be endocrine issues. Coming up to endocrine issues, there are certain endocrine issues like growth stature, growth delay, some thyroid diseases, puberty and its impact, overweight, obesity, diabetes, hyperlipidemia, and osteoporosis. Or osteoporosis is apart from this, but you can consider. So basically, thyroid gland actually regulates certain hormones, जिसकी वजह से हार्मोन्स के कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से सर्टन इश्यूज हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जैसी चीज़ें देखी जाती हैं. और बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए उनकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से साइकोमोटर डेवलपमेंट या मेंटल फंक्शन में डिफरेंसेस जैसे सोमेटिक ग्रोथ या कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की चीज़ें कॉमनली हमारे बच्चों में देखी जाती हैं. तो अगर उनके साइन एंड सिम्टम्स को मैं हाइपोथायराइडिज्म प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है. और उसके साइन एंड सिम्टम्स मैं कहूँ तो क्रॉनिक फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, हेडेक, ट्रबल इन कंसंट्रेशन, एक एंड पेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है. सो इन साइन एंड सिम्टम्स की वजह से नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रही हूँ मैं. नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज हार्ट रेट, हीट इंटॉलरेंस, ट्रिमर्स मतलब शेक करना, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट बाउल सिस्टम्स, thyroid enlargement, the menstrual disturbance, sleep disturbances. So a lot of other issues are seen, but commonly hypothyroidism is very very common. मतलब on 100 cases there's one case of hypothyroidism seen and 100 of hypothyroidism. So we'll mainly focus on hypothyroidism. So there are also some autoimmune disorders, but normally TSH value ranges 4 and less, and TSH values between 4 to 10 come under subclinical category, and TSH over 10 has to be treated. Now I would talk about what is subclinical hypothyroidism or subclinical TSH values. Sometimes when we go, normally कहा जाता है थायराइड का टेस्ट करा लीजिए. जब हम टेस्ट स्क्रीनिंग कराते हैं at birth, then 6 months until 4 years, we keep on getting screened and we find out कि मेरे बच्चे को थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, thankfully. But sometimes वो सब क्लिनिकल जो मैंने रेंज बोली उसमें पाया जाता है. एंड जो सब क्लिनिकल रेंज होती है ideally people leave it not to treat it, or they say it doesn't need any treatment, but somehow अगर हम उस रेंज में हाइपोथायराइडिज्म को मान कर ट्रीट करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ देखा जाता है ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा बेटर पाई जाती है. इसमें ट्रीटमेंट होता है लेवोथायरॉक्सिन and 1.6 to 2.2 microgram per kg per day, but this is something that we cannot do ourselves. We need proper endocrinologist assessment or some physician's assessment and guidance towards this. So, and the medicine has always to be taken empty stomach. Most of the people दूध में डालकर दे देते हैं या meals के साथ दे देते हैं. It has to be avoided, and there has to be kept an interval with iron or calcium. An empty stomach every day early morning, so it has to be given like this, and it helps in better growth of the child. And it's found that children with who are treated on hypothyroidism have better cognitive levels, better growth, better physique, better understanding. Dyslipidemia भी हमारे बच्चों में it's quite seen. So which is like हमें high total cholesterol level, HDL, LDL levels हमें check कराते रहने हैं, BMI levels check कराते रहने हैं,
डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी कई बार बच्चों में देखे जाते हैं, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप अ चेक। एंड लाइक जैसे कहा जाता है कि बहुत ऑयली फूड और इस तरीके के फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, सो वी हैव टू कीप, दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमें ऑयली और फैटी फूड्स अवॉइड करने, उनका वेट गेन ना हो, ये वी हैव टू कीप अ वॉच। कार्डियक इश्यूज़ होते हैं तो लाइक ASD और VSD की हमने शुरू में भी बात की, तो वो दे हैव टू बी अर्ली ईयर्स में पता चल जाते हैं, एंड इट हैज़ टू बी surgery is the treatment that has to be mostly done. So early surgical intervention does bring 95% success, more than that even. So then we're coming to eye and vision. uh, Most of the children have, like I said, eye problems, so we should ensure regular eye infections. Near focusing must be measured, and corrected effects with spectacles, and however we can. Myopia and hypermetropia, like it's given, so these are how and what is commonly seen. So that would vary as child to child, and it has to be treated as per that. And then coming up to uh, how to take care of eyes, we must wash eyes with normal water every day, because it's commonly seen apart, because eyes are so sensitive in our kids that they commonly have some of the other infections. So we need to wash them with normal water every day, and get regular 6 monthly checkup. We should use big board visuals to teach, and we should not avoid a TV strain or anything. Dental issues, the certain coming up to dental issues. Coming up to dental issues, there should be regular dental checkups every 6 months. We should, brush twice a day. Do gum massage, or chewy tube should be used for bruxism or biting. Some children, दांत खटखटाना या काटने की इंटेंशन होती है, तो उसके लिए हमें गम मसाज रेगुलरली करनी है, या हम उन्हें कोई च्यूई ट्यूब जैसी चीज़ भी दे सकते हैं चबाने के लिए. वी शुड यूज़ अ फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट, ताकि बच्चों में कोई डेंटल कैरीज हम अवॉइड कर सकें. कई बार फ्लोराइड पॉलिश भी होती है, वी कैन कंसल्ट आवर डेंटिस्ट फॉर दैट. एंड एनी डेंटल प्लेन प्लीज़ डू नॉट इग्नोर, बिकॉज कैन बी any severe infection. Coming up to orthopedics, every Down syndrome child have there is an atlantoaxial joint, जिसके लिए हमें एक्सरे कराना होता है अराउंड 6 years, जहाँ विच इज़ वेरी सेंसिटिव जॉइंट, और इट कैन हैव any sort of easily it can have any trauma or anything. So we must make sure that around 6 years हमें उस जॉइंट का एक एक्सरे भी कराना होता है कि कहीं इज़ इट ओके, या कोई गैप या कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, क्योंकि पुअर मसल टोन होने की वजह से सर्टन डिफॉर्मिटीज़ आर डेफिनेटली सीन इन ऑर्थो और इन बोन्स ऑफ डाउन सिंड्रोम पीपल. स्पेशली हम कहें कि पैर के पास, जैसे आप देख रहे हैं फीमर और तिबिया, यहाँ इस जॉइंट के आसपास अक्सर एक कहें कि चेंजेस देखे जाते हैं. बच्चे का पैर थोड़ा टेढ़ा दिखने लग जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ जब बच्चा खड़ा होता है तो झुक के खड़ा होता है, टेढ़ा खड़ा होता है, बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग द आर्च, बिकॉज दिस स्टूडेंट हैव फ्लैट फुट. आर्च हमें एक मस्ट कंपल्सरीली मेक देम वेयर आर्च, बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग द आर्च जॉइंट में changes आने लग जाते हैं, this knee joint, and that further leads to changes in spine, which can further be very painful and problematic. So we must make sure that even up till the child has grown, he's walking, but there should be regular arch bearing. For muscle tone strengthening, we should regularly, बच्चा चलने लग जाता है, हम exercises छोड़ देते हैं, regular exercises should be done. Fine motor activities, gross motor activities, oromotor exercises, sensory profiling, corrective posture and bone exercises, they should be regular, continued and done. मसल टोन इम्प्रूवमेंट के लिए हम जैसा कहा जाए कि काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज, जिम बॉल एक्सरसाइजेज हम करते हैं माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए, जंपिंग, और हम इस तरीके की एक्टिविटीज अक्सर कराते हैं. फाइन मोटर के लिए बहुत स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़
recommend होती है, and we people definitely work towards them. We may not use big props. We can use daily household things, but we should know what is it that actually we want to achieve. हम actually कराना क्या चाहते हैं, सिखाना क्या चाहते हैं, हमें क्या मूवमेंट देनी है बच्चे को, और जितना नेचुरल होममेड प्ले वे मेथड्स हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स बच्चे देंगे, नहीं तो दे विल स्टार्ट बिकमिंग stubborn and would avoid doing these kind of things. So in last I would say, make sure child wears arch regularly, get atlantoaxial x-ray around 6 to 7 years. Do not overlook any physical deformity beginning, because then only if we do corrective measures it can very well be reverted. Regular visits to OT and occupational therapist, and continue exercise plan religiously. Make sure you're doing exercises active way, not passive way. Annual visit to orthopedician is also must. Vitamin D3 levels हम चेक कराएं, और अगर vitamin D3 levels कई बार कम होते हैं और हमें पता नहीं होता, it leads to osteoporosis, and overdose of swimming or exercises or sports is also bad because of joint laxity. It may harm. So we should not do overdose of anything. Low strenuous exercises are recommended for our kids. And while in alternative medicine, like if I come, alternative medicines can also be recommended. But बहुत सारे issues में, like Ayurveda is very good in adenoids, naturopathy is very good for day-to-day living. Yoga can be very helpful in developing heart and lung muscles, and then some Ayurvedic medicines are very very good to boost memory and prevent chest infections, to build up immunity. So we can go for alternative care definitely. While puberty and adolescence, menarche, secondary sexual characters, and sex education should be very well taught to children before it comes. They can very well understand that, और अगर हम उन्हें से समझाएं सिखाएं, so they can very well manage these kind of issues. We may have different session for this, and we may explain it more widely, but in short I would just explain this. So in last, there should be frequent health checkups, karyotyping once at birth, cardiac assessment या echo हम कहें कि birth पे कराना. Preventive care should always be done. Hearing, ABR or OAE at birth, then 5 years, then 10 years, then 15 years. Vision at birth, 1 year, 3 year, 5 year and 15 years. Thyroid function tests twice a year for and thyroid antibodies at 2 to 3 years, and again 7 to 8 years. Dental examination twice a year, and neck x-ray 3 years, or at 3 years and at 5 years. And around sleep study is also must. So it should be done around 7 to 8 years, because insomnia is quite prevalent, and the reason we have explained in ENT management. So basically evaluation of ECG, ophthalmological, hearing, obesity, periodontal disease, celiac disease, thyroid function, arthritis, diabetes, leukemia, obstructive sleep apnea, seizures, all these things should be kept checked. And hearing के लिए बेरा टेस्ट, टेम्पैनोग्राफी, ENT चेक भी मस्ट डन. स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए एक्सरे नेक सॉफ्ट टिश्यू के लिए, और ENT चेक, BMI, ओबेसिटी के लिए, रिफ्लक्स के लिए एंटासिड्स दें, थायराइड के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड एयरवे इशूज़ के लिए ENT के लिए कंसल्टेशन लें. इम्यूनाइजेशन, फ्लू वैक्सीन, H1N1 मस्ट गो फॉर दिस वैक्सीन. एंड बाकी सब भी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन भी हमें डर के नहीं करानी चाहिए, बट वी मस्ट मेक श्योर दैट जो गवर्नमेंट जितने वैक्सीन कहती है उनको वैक्सीन हम डेफिनेटली कराएं. बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं करें किसी भी चीज़ की, क्योंकि सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप होने देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर एनी विजुअल डिफेक्ट्स वी मस्ट कंसल्ट timely intervention should be done. Dietitian की या nutritionist की consultation लेके उसके diet plan maintain करें. So a good medical intervention can definitely lead to a healthy living, and a healthy body will definitely lead to a healthy mind. A healthy mind will definitely lead to a healthy soul. Thank you so much. From Gurukul T21, NCR's exclusive Down Syndrome School. Bye-bye.